બાપુ મળ્યા છતાં પણ ગુમ થવાનું રહસ્ય અકબંધ છે। સાધુ મંડળે બાપુના ગુમ થવા પર ઉઠાવ્યા છે સવાલ। સાધુ મંડળના અધ્યક્ષ હરિદાસ બાપુનું નિવેદન, કુકર્મ થયું હોય તો જ આશ્રમ છોડીને જવું પડે। બાપુના ગુમ થવાની ઘટના સનાતન ધર્મ માટે નિંદનીય છે। બાપુએ તમામ ખુલાસા કરવા જોઈએ। સાધુઓને સનાતન ધર્મ માટે આગળ આવવું જોઈએ। कुकर में कोई थिया हो तो ज अपने मंदिर भागी सके एवी रीते तो न होय, कारण के अपने साधु सब कुछ छोड़ी मरवे माटे ज अपने रोज मरता और रोज जीता हो। अब आगे बात करिए कि अमुक बापू महादेव आते बापू गायब थिया एनी गुरु श्री हरियानंद बापू यहाँ से आश्रम में और बधाई मौन से काई बोलतो नहीं, कारण बापू आ तमारी ऊपर कोई लांछना नहीं लगता, आ बधे साधु समाज ऊपर लागी रह्या छे। बलात्कारी आसारामने मोटी राहत, रेपिस्ट आसाराम आवशे जेलनी बहार। हाईकोर्टे 6 महीनाना हंगामी जामीन मंजूर कर्या। स्वास्थ्य योग्य न होवाथी मांग्या हता जामीन। जोधपुर हाईकोर्टे आपेला जामीनना आधारे करी अरजी। तबीबी कारणोसर हाईकोर्टे जामीन मंजूर कर्या। 11 वर्ष 9 महीनाथी बलात्कारना केसमां बंध हता जेलमां।